Hello. Good evening, sir. Yeah. Good evening. You got your marks for mains? Yes, sir. How was it? It's not very good. Actually, I got three wrong in maths as well. So in maths, I got 45, in physics 58, and in chemistry 23. Yeah. You need to improve in chemistry a lot, Yes, right? yes, sir. Maths and physics has to be above 60. Sir, मैथ्स में थोड़ा वही बहुत सिली एरर हो गया मतलब पर एक क्वेश्चन था ना इंटीग्रल 0 to सॉरी पाई/6 से पाई/3 रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x मतलब इतना सिंपल था उसमें Hmm. थोड़ा एरर हो गया ठीक है, whatever has happened has happened. You have to work on the April attempt. Make sure that you can attempt more questions so that you get 60, 70 in maths and physics also like that only. यस Chemistry has to improve a lot. Focus on NCRT. यस So try this question. This is the first one. सर इज इट 3/2 Why are you saying 3 by 2? So using that triangle inequality, mod of z1 minus z2 less than equal to mod of z1 plus z2. This one. Yes, sir. This is the full inequality. If you now want to find minimum value, so that means this should be greater than something, Yes, right? yes, sir. So you can say that that would be, if you say this is z minus half minus 3 by 2 minus 2i. That's the same thing as this, right? Yes, So this is your z1, this is your z2, so that is greater than equal to mod of z1, mod of z minus mod of minus 3 by 2 minus 2i, right? yes, sir. So this is 1, uh, 1 minus, this mod is bigger, 5/2. 5 by 2. So So we can directly find it out because we can take 1/2 outside the mod and 3 plus 4i mod of 3 plus 4i is 5. 1 minus 5 by 2, you're getting 3 by 2 here. Yes, Okay. So by triangle inequality, we can get that this is greater than equal to 3 by 2 for sure. yes, Uh, okay. It is also possible to think about it as a circle. Like this is the distance from this point, right? yes, sir. Uh, Distance from minus 3 by 2 minus 2i. So I just thought circle idea is good because the distance of z from origin is given, not from 3 comma 4, like minus 3 comma minus 4. This point is minus 3 by 2 comma minus 2, and
They have told you that it is lying outside a circle. Mod z is greater than 1 means this is a complex number lying outside this circle, right? Correct? Yes, yes, sir. This is a circle of radius 1 and the point can be anywhere outside the circle, right? So actually the minimum value can be 0 also, right? Yes, If sir. the point was here, right? Yes, sir. So the minimum value we will say is 0 in this case because the locus is such that the complex number is greater than 1 means it's the exterior part of a circle and that exterior part contains this point, Okay. right? Yes, sir. So the minimum value actually comes out to be 0. Okay. Do you understand what is happening? Yes, sir. We are using geometrical property. So there could be a possibility that z is the point minus 3 by 2 minus 2i, right? Yes, sir. That still satisfies the condition mod z is greater than 1. In that case, the answer becomes directly 0, right? Yes, sir. Okay, next one is this one. Let S be equal to z belongs to complex number such that mod of z minus 1 is equal to 1 and root 2 minus 1 times z plus z conjugate minus I times z minus z conjugate is equal to 2 root 2. Uh, let let z1 and z2 belong to S such that mod z1 is equal to maximum of z belongs to S mod z and mod z2 is equal to minimum of z belongs to S mod z. Then we have to find out root over root 2 z1 minus z2 mod whole square. So both these conditions have to be satisfied for the elements of this set and then you have to find z1, z2 and all. I think the first. Don't tell me directly something, just find it out and see if you can get the correct answer. Okay.
So just 1 more minute time. Hmm. Sir, I'm getting a very weird answer. क्यों? ये बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं. दिस इज अ सर्कल, दिस विल कम एज अ लाइन, राइट? Yes, sir. Circle equation is x minus 1 whole square plus y square is equal to 1. And this equation will come root 2 minus 1 into 2x Yes, minus I into 2iy is equal to 2 root 2. So yes, sir. minus 2y square becomes plus 2y. You have root 2 minus 1 into 2x. So this becomes, this is my line equation. Yes, sir. Sir, can I tell you the complex numbers which I am getting? What are you getting? The first one is 4 by 3 plus minus 2 root 2 by 3 I. And the other one is 2 plus 0 I. So You're total, making a mistake. That is not the correct one. You're not solving intersection properly. So if you see here, this is x square minus 2x plus 1 plus y square. Y square is root 2 minus root 2 minus 1 x whole square is equal to 1. So this becomes 2 plus root 2 minus 1 whole square x square minus 2 root 2 minus 1 x, and you have x square minus 2x plus 1 here is equal to 1. 1 gets cancelled. You have x square term here, x square, you add 1 and this, you get 1 plus 2 plus 1 minus 2 root 2, right? yes, sir. Minus 2x here, and you have this term. So minus 2 plus 2 root 2 into root 2 minus 1 x, and plus 2 you have here. Yes, sir. So this is becoming 4 minus 2 root 2 square into 4 minus 2 root 2 minus this becomes 2 into 2. This is 2 into 2 4 plus 2 6 minus 2 root 2. 6 minus 2 root 2x plus 2 equals 0, We can right? go out. You can cancel 2. You'll get x square into 2 minus root 2 plus 3 minus root 2 x plus 1 equals 0, right? Yes, Solve this quadratic by quadratic formula, right? sir, we Is can this actually is one. this the quadratic you got? Yes, sir. No, sir. Not this one. I got 3x square minus 10x plus 8. It was very clean.
right? It's a mistake. You can just factorize it by adding 1 plus 2 minus root 2, right? Yes, sir. So it is obvious that the roots are x is equal to 1 and x is equal to 2 minus root 2, I think. Yes, sir. I mean, we have to check that properly. It looks like x squared 2 minus root 2 plus I 2 think minus root 2 x plus 1. So it is 2 minus root 2 x x plus 1. So you are getting x is equal to minus 1 or x is equal to minus 1 by 2 minus root 2 or something, right? yes, sir. माइनस वन आ रहा है कि प्लस वन आ रहा है? सर वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से चेक कर लेते हैं. This should come. तो -1/2 माइनस रूट टू. हाँ सही. So now these are the x values. You can put them here and get the y values, and then you have to solve. Yes, Like the mistake you are making is simple line or circle का intersection, right? yes, sir. Sir, I wrote the wrong equation of line. तो वहां पे गलती करोगे तो नहीं होगा ना फिर. Hmm. Okay, let's move on. You can solve that later. Yes, These are by the way 2024 के JEE वाले questions हैं. अभी वाला जो shift है. हाँ, Let P is equal to Z belongs to C mod of Z plus 2 minus 3i is less than equal to 1 and Q is equal to Z belongs to C Z times 1 plus I plus Z conjugate times 1 minus I is less than equal to minus 8. In P intersection Q, let Z minus 3 plus 2i be maximum and minimum at Z1 and Z2 respectively. Okay. If mod Z1, you have to basically find mod Z1 square plus 2 times mod Z2 square yes, sir. is equal to alpha plus beta root 2. You have to find alpha plus beta. Similar question. Make sure you do it correctly this time. Yes, sir. Sir, again, I think we have circle and a straight line because there is no quadratic term in U. समझ में तो तुमको पहले भी आ रहा था लेकिन आंसर सही लाना है ना. हाँ, केयरलेस मिस्टेक नहीं करना है. हाँ.
सर इज इट 134? ये वाले में तुमने क्या किया है? लाइन इक्वेशन क्या है तुम्हारा? द लाइन का इक्वेशन आया है x माइनस वाई प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ओके। और सर्कल का इक्वेशन रहा है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। See, this is interior of a circle, right? यस सर। X, so circle's equation center is -2 and comma 3, right? यस सर, इन So सेकंड। -2 whole square plus y minus 3 whole square less than equal to 1. यस -2 comma 3 second quadrant circle, and radius is, it is interior of a circle, and this line equation is coming as basically z plus z conjugate, so 2x plus I and minus I, so I common, z minus z conjugate, so 2iy is less than equal to -8, so this is -2y, right? यस सर। Minus y plus 4 is less than equal to 0. So you should roughly draw the graph. So this is basically y is greater than equal to x plus 4, right? यस सर। So y is equal to x plus 4 का ग्राफ बना सकते हो easily, हाँ। like this, and y should be greater than equal to x plus 4, so it is the upper region of this, right? यस सर। This point is -4 comma 0, this point is 0 comma 4, and now circle center is -2 comma 3, यस -2 comma 3, so somewhere inside this, right? यस सर। So the intersection points are -2 and -1. X equal to -1 and x equal to -1. X is equal to -2. You can put y is equal to x plus 4 here and try to solve. Yes, You've sir. done that. तो सर्कल कुछ ऐसा है मान लो. हाँ. So you need the portion above the line in the circle, right? Yes, sir. That is your P intersection Q, हाँ. right? हाँ. Yes, sir. And in P intersection Q, now you have to say the maximum and minimum distances from the point 3 comma -2. सर वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना लेफ्ट मोस्ट वाला लाइन के साथ, वो डायरेक्टली बिलो द सेंटर होना चाहिए. नहीं, the diagram is not accurate. I don't care. We have to find maximum and minimum distances of points lying in our P intersection Q region from here, right? Yes, sir. Okay. So now you have to solve and find the points of intersection of this line. Like basically draw a bigger figure, draw the circle first and then draw the line, right? Yes, sir. -2 comma 3. X is -2, y is 3, and radius is 1. So -2 से वो -1 तक जाएगा इधर, हाँ. इधर, और हाँ. -3 तक जाएगा, और 4 हाइट तक जाएगा, और 2 तक जाएगा ऐसा. हाँ. This is -2 comma 3, and this point is -2 comma 2, and this point is -1 comma 3, and so on, right? Yes, sir. And the Fine. line, this is -2 comma 2, so -4 comma 0 will be somewhere here, and 4 comma 0 will be somewhere here. सर तो मिनिमम पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट -2,2 हो जाएगा और मैक्सिमम वाला -2,4. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? -2 -1 मतलब मेरा यही आ रहा है, एक बार आप भी कंफर्म कर दीजिए. हाँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बस तुमको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक, रेट हाँ. x+2 स्क्वायर प्लस x+1 स्क्वायर इक्वल टू 1. ये प्लस
x plus 1 square equal to 1. So get 2x square plus 4x plus 2x, 6x plus फोर 4 equal to 0. एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। So x is equal to minus 1 minus 2. So when x is equal to minus 1, y is equal to x plus 4 डालोगे तो क्या आएगा? सर ये जो आप पॉइंट्स मार्क किए ना फिगर में, वो तो वहीं से पास करेगा। माइनस 2। हम्म। हाँ तो हाँ। ये यही पे है ऐसा, राइट? हाँ। It passes through these 2 points. Roughly like this, something like this. And we need the region above the line. So we need this region, यस। right? And now all of this region may points are there z. Now we have to take maximum minimum distances of it from a third point. तो सर -2,2 वाला जो है वो आपका मिनिमम हो जाएगा, और -2,4 मैक्सिमम। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट 3 कॉमा -2 है। वो तो फिक्स्ड है सर। हाँ, वो तो फिक्स्ड है ना। तो हम लोग इधर देखें। वो फिक्स्ड है तो उसके बारे में सोच के करोगे ना, ऐसे थोड़े। हाँ मतलब। फिक्स्ड है मतलब, हाँ वो। तो उसके बारे में सोचोगे नहीं कि वहां से मिनिमम क्या होगा। हाँ वो जो लास्ट में, क्योंकि ये भी जो है हाँ सही बोल। तुम सोच ही नहीं रहे हो उसके बारे में, तुम ऐसे ही अज्यूम कर लो कि ये होगा और ये होगा, कैसे, क्यों? मैं सॉल्व की। x इज इक्वल टू 3 इधर है, y इज इक्वल टू -2 कहीं इधर है। ये पॉइंट यहाँ पे है, तुमको इस पॉइंट से डिस्टेंसेस इस पूरे रीजन का देखना है कि मिनिमम मैक्सिमम कब होता है। हाउ कैन इट बी दीस बोथ? वन ऑफ देम हैज टू बी दिस। सर पॉइंट गलत क्वाड्रेंट पे ड्रॉ कर दिया। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। मिनिमम डिस्टेंस भले यहाँ पे कहीं होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो मिनिमम होगा, राइट? मिस्टेक हो गया था ना, ये 3,-2 थर्ड क्वाड्रेंट पे ले लिए थे, वही मिस्टेक हो गई। तो ऐसे केयरलेस मिस्टेक है ना ये सब। हम्म। वो सब नहीं करना है, केयरलेस मिस्टेक्स नहीं करने हैं। तुमको एक परपेंडिकुलर लाइन 3 कॉमा -2 से ड्रॉ करना है, वेयर इट कट्स द होल सर्कल, राइट? यस। लाइन परपेंडिकुलर टू द अर्लियर लाइन जो ऐसा था, राइट? हम्म। ये पॉइंट हो गया मिनिमम, हाँ। राइट? एंड हाँ। देन यू कैन गो अक्रॉस एंड सी मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, हाँ। करेक्ट? यस। ओके, नेक्स्ट वन इज लेट z1 and z2 be two complex numbers such that z1 plus z2 equals 5 and z1 cube plus z2 cube equals 20 plus 15i. You have to find mod of z1 power 4 plus z2 power 4.
कुछ हो रहा है? हाँ सर, 103 - 4i। मॉड निकल रहा है। अच्छा मॉड, एक मिनट। सर रेंज है मॉड का इतना, मतलब बहुत ज्यादा ही बड़ा नंबर आ रहा तुम्हारा क्या आ रहा है? Z1 पावर 4 प्लस Z2 पावर 4। है। 103 - 4i। कुछ गलत है। सर मेथड एक बार बोले। हम्म। सर Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब को डिवाइड कर देंगे Z1 + Z2 से। हम्म। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 आ जाएगा 4 + 3i। आएगा 4 + 3i। ओके। और फर्स्ट वाले को एक बार स्क्वायर कर देंगे हम्म। तो सेम चीज आ जाएगा, बस यहाँ 2Z1 से हाँ हो जाएगा। और हाँ अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3Z1 Z2 = 21 माइनस और फिर एक बार फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे दोनों को। तो you'll get Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। 2 Z1 square plus Z2 square plus Z1 square plus Z2 square. So 3 times. हाँ You will get 8 + 6i. So 33 plus 6i. हाँ So 3। Z1 square plus Z2 square is coming out to be 11 plus 2i. और फिर अब ये जो Z1 पावर 4 + 3, सॉरी Z1 पावर 4 + Z2 पावर 4 है, उसको Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। 11 plus 2i whole square minus 2 Z1 Z2 was this हाँ 7। 7 minus I whole square. You'll get 121 plus 4i square plus 444i minus 2 times of 49 plus I square minus 14i, right? हाँ You're getting 121 minus 4 plus 44i minus 98 minus 2i square becomes a plus 2 plus 28i. हाँ So you are getting 25। हाँ 102, so 9 नहीं 25 कैसे आ रहा है? नहीं 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 सॉरी, ये 51 आ रहा है। हाँ 25। और इधर आ रहा है प्लस 72i, राइट? हम्म। क्योंकि तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो बार बार बस। ये सही है मतलब मेथड। मेथड में क्या गलत है? मेथड सब सही है, लेकिन तुम्हारा आंसर ये तो तुम बोल नहीं रहे थे। नहीं कहाँ पे तुम गलत करते हो? यहाँ पे। नहीं यहाँ, हाँ नहीं मेरा सर वही रॉन्ग हो गया था, Z1 Z2 निकालने में रॉन्ग हो गया था। वो मेरा आ रहा था ना। अरे नहीं, वो सही आया था, वो वैल्यू गलत पुट कर दी। ऐसे केयरलेस मिस्टेक करोगे तो कैसे चलेगा? 7, दिस इज 3 into 7 plus 24i, इट इज ऑब्वियस नाउ मॉड इज 25 इसका। हाँ 25 से 75 नहीं नहीं। मॉड इज 3 into 25, 75 आंसर। कोई इशू ही नहीं है कैलकुलेशन में। हाँ तुमने बेकार में तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बस। हाँ Okay.
Next one is this one. If alpha denotes the number of solutions of mod of 1 minus I power x equals 2 power x, and beta is equal to mod of z by argument of z, where z is pi by 4, 1 plus I power 4, 1 minus root pi I by root pi plus I plus root pi minus I by 1 plus root pi I. Then distance of alpha comma beta from the line 4x minus 3y equals to 7 is, basically you have to find alpha beta correct. If you can find that, the question is easy. Yes. अल्फा आ रहा है। अल्फा तो 1 है, x इक्वल टू 0। हम्म कैसे पता चला अल्फा 1 है? सर वो मॉड भी होना चाहिए, ये रूट 2 ही है, तो अब 2 पावर x बाई 2 इक्वल टू x, तो x बाई तो हाँ, तो हम्म x बाई 2 इक्वल टू x 0 पे है ना। और तो अल्फा 1 है, बीटा ये चीज निकालना है, जेड को पहले सिंप्लीफाई करोगे तभी निकलेगा। हाँ, तो ये वाला तो 1 प्लस आई वाला तो सीधा 4 ही आ रहा है, तो 4 4 तो कैंसिल ही हो गया, बस बात पाई बचा है, और अंदर वाला सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो वो भी मेरा 1 प्लस पाई आ रहा है डिवाइडेड बाई रूट पाई प्लस आई। वो से 2 मिनट बस करते हैं, ठीक है। हम्म
सर बीटा में फिर से पाई आ जाएगा, 2 पाई हो रहा है वो। सही है। चलो गलत बोल रहे हो, आर्ग्यूमेंट जेड डिवाइड नहीं करना है। अच्छा देखिए। क्या है बीटा? तो बीटा तो लगा 4 है। तो ठीक। अब डिस्टेंस निकालने में क्यों दिक्कत हो रहा है? वही डिस्टेंस निकाल देते हैं जस्ट। तो द डिस्टेंस 3। लेकिन अगर मैं बोलता नहीं तो तुम यहाँ पे इसको 2 पाई लेके चल देते, राइट? सर ध्यान ही नहीं दिया, आर्ग्यूमेंट जेड भी लिखा है। तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है, तुम क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी करेक्ट होगा और सिली मिस्टेक्स नहीं होगा। यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस करेक्टली, यू आर रशिंग सो मच दैट यू आर मेकिंग सो मेनी सिली मिस्टेक्स। हाँ सबसे फर्स्ट चीज ठीक ठीक करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक दो बार पढ़ना है और अंडरलाइन करना है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तभी जाके आगे बढ़ना है। हाँ। Okay, we'll continue tomorrow's class. We'll do complex numbers only. Next week onwards, we'll do PNC and counting. ओके। तो पीएनसी में काउंटिंग में ना वो सब थोड़ा, तो वो सब जो बाई एक क्लास में बस, तो जो बाइजेक्शन है हमारा जो है ना, वो आप जो कराते हैं नॉर्मल ओलंपियाड वाले कोर्सेज में, वो भी एक बार करा दीजिएगा प्लीज। Okay, we'll see. But that why is that relevant? The JEE मेंस में तो वो relevant ही नहीं है। नहीं सर, एक जैसे एक फॉर्मूला होता है ना, जो सर मतलब पढ़ाया तो नहीं जाता, मतलब जेई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, लेकिन ना सर मतलब किसी भी साल आ सकता है, बहुत जनरल मेथड टाइप लगता है। एक क्या सर फॉर्मूला? एक सेकंड सर, बस एक सेकंड टाइम दीजिएगा, मैं आपको बताते हुआ इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, वो है ना कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन अलाउड, ये वाला टॉपिक। Combinations with? रिपीटेशन अलाउड। तो जैसे क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन बाय 5 आइसक्रीम्स फ्रॉम अ शॉप इन विच 4 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स आर अवेलेबल। हाँ, तो ऑब्वियस ही है, इसमें क्या दिक्कत आप है? इसमें क्वेश्चन कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसमें। आप क्वेश्चन सुनेंगे अभी? हाँ। हाँ वही इस सर। जनरली पूरे सब्जेक्ट में काउंटिंग और कॉम्बिनेटोरिक्स में देयर आर वेरी फ्यू formulas. You don't have to remember formulas. You have to understand how to do it. सर तो इसका बिना इसके वाले से कैसे होगा, मतलब जो नॉर्मल मेथड उससे कैसे होगा, मतलब एक बार बता।
person has to get 5 ice creams and 4 different flavors are there. Yes, sir. In many ways, a person can buy 5 ice creams from a shop in which 4 different flavors of ice cream are available. So you take different cases. All the ice creams are different flavors. You have to do case work. और कैसे करना है? तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है एन प्लस आर माइनस, सर इसका रिजल्ट भी है एन प्लस आर माइनस वन सी आर। That is just selections. That's just stars and bars method. सर वही स्टार्स एंड बार से। N plus R minus 1 CR कौन सा मेथड से है? नहीं सर, मतलब रिजल्ट सेम है, वो भी मेरा मेथड भी सेम ही है क्या? वही मेथड है। क्वेश्चन का मतलब एक पर्सन को 5 डिफरेंट फ्लेवर्स का सिलेक्ट करना है, तो तुम फ्लेवर्स और आइसक्रीम्स में स्टार्स एंड बार्स कर रहे हो. Anyway, we'll discuss it, but we'll discuss it in when we do the questions. सर तो वो पाथ फाइंडर वाला जो बुक है उसमें एक अलग सेक्शन ही दिया हुआ था ये, इसीलिए। और सर ये ब्रिज वाला भी जो, सॉरी ब्रिज बोल रहे, ग्रेड वाला प्रॉब्लम होता है ना। That's all also simple only. ग्रेड हाँ। वाला प्रॉब्लम्स में बस तुमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है. यू हैव टू सेलेक्ट राइट मूव्स, अप मूव्स. यस यस सर। इट्स जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स. आर यू उसमें कितने वेज में यू कैन हैव enough letters so that you reach from one point to another point, यस right? यस सर। Okay. Anyway, we'll discuss it in next week's classes. ओके थैंक यू। Bye.